Thank you, Nisha. Just a minute. Can you see the this thing? Just a minute. Chavi? अच्छा, I have to start it. कैसा आ रहा है ये screen sharing board? Can't see my visible है. Now it's visible. Nisha, can you see the screen now? Yes, ma'am. Yes, The screen is visible, ma'am. Thank you so much. So today I'll start my session with a shlok from Gita, which is Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhiutthanam Adharmasya Tadatmanam Srijamyaham Paritrayan Sadhunam Vinashaya Chadushkritam Dharma Sanstapna Thaya Sambhavami Yuge Yuge. It might be appearing a little unusual to you that a concept of or a topic of biological science is starting with the words which were spoken by Lord Krishna to Arjun during the war of Mahabharat. These are parts of Gita. This shlok is from Gita, where Lord Krishna tells Arjun that whenever there is adharma, whenever there is fall of religion, irreligion, then I will come to the world. I will come whenever there is this. I will repeatedly, मैं बार बार आऊंगा इस युग में और मैं उस चीज को सुधारूंगा. And according to me, I think biological science is also same. I'm comparing biological science with Lord Krishna because biological science has come to the aid of mankind whenever there is disease or threat to the survival of mankind. So I feel that biological science is that what Lord Krishna has done for the survival of the mankind. Similarly, biological science has always been present for our aid and to bring us out of difficulties of disease and any other thing. Now, what we see is that biological science is a very vast subject. बोलने में हमको लगता है we are students of botany, zoology, biotechnology, and when we talk about biological science, we feel that botany, zoology, biotech is the only kind of science. But according to me, it has developed in all those areas which impact human life. Biological science is developed into all those areas which have impacted the human life, or in other words, we can say that humans have tapped all and studied all those living things from which we can benefit. जो हमें benefit दिलाते हैं, हमने वो हर living thing को पहचाना है, जाना है और उसके बारे में पढ़ा है. So we can say that biological science is basically life science, which encompasses all the streams where life is present. One of the most important branches of biological science is agriculture. You can see that we were food gatherers. अगर हम ancient times में जाएं, if we go back in our history, the human beings were first food gatherers. They were not growing any crop. They were earlier just gathering food and eating through that. But later on, they started growing crops. Then they started learning how to store the crops for future use. And then they started increasing the yield, controlling yield spoilage by microbial and insect diseases. So in this way, from food gatherers, we have become, the science has developed so far that we are now feeding millions through agriculture. And all this has been done with the help of developments that have occurred in the field of agriculture, which again is a branch of biological science. The story does not stop here. We have animal husbandry and veterinary science. You very well know, I will relate a very interesting incident to you, or a fact to you, that dogs have been with human beings for 2500 years. 25,000 सालों से
human beings के साथ dogs रहे हैं, and we have selectively breeded them and changed them according to our needs. We have selected those traits in the dogs which we like ourselves, and from wolf we have converted them to around 300 species of dogs which are present, which are known, which we have developed also, and we have made them so I can say user friendly, where there are other sciences also, like we have ecology. I know the students might be shrieking कि कितना bored subject है, but let me tell you, it is one of the most relevant subjects today. We have food and nutrition, such an important subject. If you remember, in the prime of COVID, we are being told to look at our feeding habits. हमें अपने खाने का ध्यान रखना है. And through the food and nutrition, how immunity can be developed, how we can remain good and healthy. There is microbiology is there, virology is there, medical science I need not tell you, because we know the advances of medical science is saving us from the world nowadays, which is also part of biological science. Then there is psychology, marine biology, biotechnology. I'm sure आप लोगों का subject है. We have animal conservation, we have plant conservation, and so many things. So biological science encompasses anything, any knowledge which is related to living things, and therefore it is a very vast subject. Now I'll tell you another very interesting story. It's the history of the cesarean section. You must have heard, the students must have heard of cesarean or C-section. I myself have given birth to 2 children with the help of the C-section. But you will be astounded to know that the C-section dates back as far as the ancient Rome. Let me tell you, the period of ancient Rome was Roman Empire started in 753 BC, that is 700 saal before the birth of Christ. Nisha, somebody's voice is coming and it's disturbing me. Somebody has not muted their this thing. Okay, ma'am. I mute. Ma'am, you are host now. You can also mute, or I can mute. But you know, my screen is quite crowded with my. Okay. Vanshita Verma, please mute yourself. Who is Vanshita? Okay, Vanshita, you mute yourself. Okay, ma'am. Sorry for the interruption, ma'am. You can continue, ma'am. No, absolutely no problem. It was just काफी disturbance आ रहा था. Okay, ma'am. Thank you, Nisha. So I was saying that this 700 आज से 2700 साल पहले cesarean section was being done. So you can well imagine that so many lives of mothers and children have been saved with the help of this C-section, and the same procedure is being done till today. And the picture that I have showed you on the slide is a picture from the ancient time itself, and it is depicting that how cesarean section was done at that time. And it is suggested that Pliny is an elder or a very learned man from Roman period, and he has said that Julius Caesar was named after the ancestor who was born by C-section. You know, Julius Caesar is a very famous character in the history, and the cesarean section ki spelling till date is because of Caesar, which is Caesarean, which is very unusual. Some people think because scissors का use हुआ है, कैंची का use हुआ है, इसलिए उसको cesarean बोलते हैं. It is not so. So from ancient times, from 2700 say, cesarean section is being done, and originally it was designed to save the baby from the womb of a mother who had died in childbirth. But now it is being used, and it has been used through the centuries in such a way that it can help easy birth of children. Another very famous person from the Indian background is Sushrita. He was a man. He's called as the father of the plastic surgery. सुन के आश्चर्य हुआ होगा आप लोगों को कि he lived
1000 to 800 years before the birth of Christ. शायद आप में से कुछ BC और AD को नहीं समझते हो, तो let me tell you that BC means before the birth of Christ, that is अपनी जो प्रेजेंट है, हम आज 2020 में बैठे हैं, और सन 1 के भी 800 या 1000 साल पहले सुश्रुता थे, जिन्होंने एक किताब लिखी सुश्रुता संहिता, एंड उन्होंने सर्जरी और इतनी रिफाइंड यानी प्लास्टिक सर्जरी तक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसको परफॉर्म करा और लिखा है, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन इन द एंशिएंट टाइम्स. और ये जो साथ में आप स्लाइड पे इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, शायद आपके मोबाइल्स पे बहुत छोटे दिख रहे हो, बट स्टिल इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो दे हैव बीन नेम्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स, दे हैव बीन नेम्ड इन संस्कृत, बिकॉज ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सुश्रुता ने डिफाइन करे हैं, डिस्क्राइब करे हैं और यूज करे हैं ड्यूरिंग सर्जरी. All of them have been named over here, indicating that such high level of instrumentation was also there. Matlab, these instruments were there to perform the surgery, and he is called as the father of the plastic surgery, and he performed many procedures and many medicines, and an award to the Indian doctors has also been constituted in his name to commemorate him, because he was आज से 3000 साल पहले he was the person who was doing surgery. एक टाइमलाइन बताना चाहूंगी आपको. आई थिंक आप लोग को लग रहा होगा कि that why I am telling you the history of science. I am trying to convey to you that science has, biological science specifically, has contributed because gradually the science has developed. Whenever there were sages, there were people, whenever human civilization got together and advanced, the first thing that bothered them was their own body and the living things that were around them. And that was the first science to develop, because their body was of their concern and all the living things around them was their concern. So they started learning very fast about other things. Mathematics, physics, astronomy, and all these things came later, but their body and the living things around them came the first. I'm just giving you a brief timeline. टाइमलाइन यानी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से सिविलाइजेशन कब कब हैं, ताकि हम समझ सकें कि कौन कौन सी डिस्कवरीज और कौन कौन से चीजें कितने सालों से यूज की जा रही. जैसे मैंने आपको बोला कि एनिमल्स हैं या डॉग्स हैं, 25,000 साल से हमारे साथ हैं. जब हम भी डेवलप हो रहे थे तब से वो हमारे साथ हैं. तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो 8000 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक एग्जिस्ट करता था. वैसे ही सुमेरियन सिविलाइजेशन 5300 ईसा पूर्व से 2100 ईसा पूर्व तक एग्जिस्ट करता था. इंडियन सॉइल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आज से 2500 साल पहले एग्जिस्ट करता था और 1700 में उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था. इसी प्रकार बेबीलोनियन सिविलाइजेशन 1895 बीसी से 1595 बीसी और रोमन सिविलाइजेशन 753 बीसी से 500 बीसी. रोमन सिविलाइजेशन के टाइम पे है सीजर वगैरह, और आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में एंशिएंट इंडिया में सुश्रुता थे. सो दिस इज द ब्रीफ टाइमलाइन दैट एग्जिस्ट इन दिस, जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है उसके हिसाब से. नाउ आई विल टेल यू दैट in Mesopotamia, if I go back to the slide, you will realize that Mesopotamian civilization was in 8000 BC to 2000 BC. इसी civilization में कुछ healers होते थे which were called as Asu. There were some healers which were called as Asu. They can be compared to the modern physician, and they can be compared to the modern physician. They used to do physical treatment. Physical symptoms को, जैसे बुखार होता है या दर्द होता है, इस टाइप के symptoms को treat करते थे. आज से 8 और 2 10,000 साल पहले, 8000 साल पहले, 9000 साल पहले
वो इन सिम्टम्स को ट्रीट करते थे बाय फोक रेमेडीज, जो कि आसपास के पेड़ पौधे, एनिमल एक्सट्रैक्ट्स या प्रोडक्ट्स से या मिनरल्स से ये पोशंस बनाते थे, एनिमा बनाते थे, ऑइंटमेंट्स बनाते थे, पुल्टिस बनाते थे। और इन सब चीजों को ये सारे नाम आज भी कॉमन है। हम आज भी जानते हैं कि दवाइयां मिलती हैं, हमको एनिमा क्या होता है, हम ऑइंटमेंट्स जानते हैं, हम पुल्टिस जानते हैं। ये सारी चीजें आज से 9 या 10,000 साल पहले से इस्तेमाल करी जा रही थी इन फिजिशियंस के द्वारा। ये ड्रेसेस वुंड की पट्टी करते थे, ये डिसलोकेटेड लिम्स को ठीक कर सकते थे, दे वर परफॉर्मिंग सिंपल सर्जरीज, और दे वर ऑल्सो डूइंग प्रोफाइलिक्स। प्रोफाइलिक्स क्या है? प्रिवेंटिव मेडिसिन को प्रोफाइलिक्स बोलते हैं। यानी आप सोचिए, आज हम भी प्रोफाइलिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप और मैं जो प्रिवेंटिव मेथड्स यूज कर रहे हैं कोविड के खिलाफ, वो प्रोफाइलिक्स है। यानी हम मास्क पहन रहे हैं, हम हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो प्रिवेंट करते हैं डिसीज का स्प्रेड, ये कॉन्सेप्ट आप सोचिए कि आज से 10,000 साल पहले से चले आ रहे हैं। हम आज नया कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही चीजें कर रहे हैं जो पहले से चला आ रहा है। ये क्ले मॉडल्स हैं, आप देखेंगे, दिस इज हाउ नॉलेज वाज अक्यूमुलेटेड। ये क्ले मॉडल्स हैं। ह्यूमन बींग्स अपने आसपास जो भी लिविंग थिंग्स को देखते थे, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते थे। they wanted to learn about things around them. These are the clay models, because there was no writing, there was no paper, pen and other things to write upon. So they used to make clay models of animal livers, which are dating back to 19th and 18th century BCE, found in the Syria, in a palace in Syria. So you can imagine, आज से इतने हजार साल पहले there was a knowledge of biology, because biology was very vital to their own living and their survival. Now we come to another very famous pair, Plato and Aristotle, जिसको हम प्लाटो और अरस्तु बोलते हैं हिंदी में, शायद नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इन लोगों ने पहले सिस्टम ऑफ नेचुरल फिलॉसफी डेवलप किया। एरिस्टोटल तो आई एम श्योर आपने अगर बॉटनी और क्लासिफिकेशन थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप पाएंगे कि एरिस्टोटल का नाम वहां पे भी आता है, क्योंकि ही प्रोड्यूस्ड मेनी बायोलॉजिकल राइटिंग्स दैट वर एम्पिरिकल इन नेचर। यानी पहली बार उसने कई चीजों के बारे में नई जानकारियां इकट्ठी करी। ही मेड काउंटलेस ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, especially the habits and attributes of plants and animals on Lesbos. Lesbos is a place where he used to live, और वहां उसने लेस्बोस के आइलैंड पे बहुत सारी उसने स्टडीज करी। और क्लासिफिकेशन पढ़ के हम बोर जरूर होते हैं, बट ही क्लासिफाइड मोर देन 540 एनिमल्स। यानी उसने बहुत गहन उनकी जानकारी इकट्ठी करी और उनको एक क्लासिफिकेशन में पुट अप करने की कोशिश करी कि कौन सा एनिमल किससे ज्यादा बेहतर है और कौन किससे कम बेहतर है। क्लासिफिकेशन इज अ स्टडी ऑफ what is more evolved and what is less evolved. So he tried to do that with 540 animals, and he dissected at least 50 of them. So he had lots of this thing, knowledge regarding biological science. The important legacy of this period includes substantial advances in the factual knowledge. बहुत सारे factual knowledge increase हुई from Aristotle, जो कि anatomy से related थी। Anatomy, I'm sure everybody knows, is the study of the physical attributes जो हैं, physical structure जो है वो किस प्रकार का है, उसको anatomy बोलते हैं। Zoology पे, botany में, mineralogy में और geology में। So he practiced उसकी study has accumulated the knowledge about all these things. Now a little bit about the knowledge that was existing in India. तकरीबन हम लोग जानते हैं, मैंने बताया सुश्रुता हैं जो कि 800 साल पहले थे, 1000 या 800 साल पहले थे। वहां से लेकर आज तक भी बहुत सारी नॉलेज एग्जिस्ट करती थी, बहुत सारे
प्रोसीजर्स किए जाते थे, इवन सी सेक्शन वॉज परफॉर्म्ड इन इंडिया एज वेल, और इस तरह से बहुत सारा मेडिसिनल था। आप सोच सकते हैं कि बायोलॉजिकल, जैसे आज अगर मैं बोल रही हूँ कि बायोलॉजिकल नॉलेज बहुत हेल्प कर रही है मैनकाइंड को, तो जिस वक्त ये लोग एग्जिस्ट करते थे, चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे सुश्रुता हो, दे मेड एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। ये उस वक्त भी बायोलॉजिकल साइंस उस वक्त के लोगों को भी बहुत सहायता कर रहा था और बहुत सारे डिसीजेस से और बहुत सारी परेशानियों से बचा रहा था। एंड ये मैं सिर्फ आपको मेडिकली बोल रही हूँ या डिसीज से रिलेटेड बोल रही हूँ, बट उस वक्त एग्रीकल्चर की जो नॉलेज थी वो भी एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर रही थी, और जिसके कारण लोगों को बेहतर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मिल रही थी एंड दे वर एबल टू प्रोड्यूस बेटर। उस टाइम के हिसाब से दे वर प्रोड्यूसिंग क्वाइट गुड। सिमिलरली जो एनिमल्स के से रिलेटेड या जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो जानकारी हमने तब तक इकट्ठी कर ली थी, वो हमको कितना हेल्प कर रही थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरी फील्ड ऑफ बायोलॉजी साइंस का लेवल जो भी था, जिस वक्त के लोग थे वो उस वक्त के लोगों को इट वाज प्रोवाइडिंग अ लॉट्स ऑफ हेल्प। सिमिलरली चाइना हुआ, बाइजेंटाइन हुआ, दीज आर द कंट्रीज जो पुराने सिविलाइजेशंस हैं जहां बहुत सालों से ह्यूमन पॉपुलेशन रह रही है। दे ऑल had greater level of knowledge related to science and biological science, and they were using this for the betterment of life of the humans. Now a small, I am sure all of you are students of biology, and yet I will like to explain these terms to you because they are in use a lot, and I will also be using a few of them. Isliye I want to tell you that what is an endemic. An endemic is a disease which has originated from the place where you are living. अगर कुछ चीज इंदौर में डेवलप हो तो हम कहेंगे कि इंदौर के लिए एंडेमिक है, because that disease has originated from Indore. या जहां पे भी हम रह रहे हैं वहां से डेवलप होने वाली चीज को हम एंडेमिक बोलते हैं। वहीं एपिडेमिक जो है, एपिडेमिक इज अ डिसीज वेयर डेमिक वर्ड मीन्स डिसीज। तो एपिडेमिक मीन्स दैट डिसीज विच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि कोविड। अब आप बोलोगे कि कोविड को तो पर पैंडेमिक बोल रहे हैं, तो द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक इज that epidemic is a disease which has come from outside from where you are living and has affected a population of people. But pandemic, pan शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा, large, बहुत ज्यादा। तो पैंडेमिक का मतलब हुआ जब कोई डिसीज बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है या बीमार कर देती है, तब उस डिसीज को नाम देते हैं पैंडेमिक, एंड देयरफॉर द नेम गिवन टू कोविड-19 इज पैंडेमिक। स्पोराडिक इज जब अचानक से कहीं कोई डिसीज आ जाए तो उसको हम स्पोराडिक बोलते हैं। सो दीज आर द टर्म्स। आई एम श्योर मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ, बट फॉर द यूजेज ऑफ माय स्पीच या टॉक, these are the this I have given you. Now I will tell you certain very interesting and small incidences. I will talk to you about some isolated incidences. And, begin with, I will talk to you about participants to mute themselves. Please mute. I request participants, especially students, to mute themselves. Okay? Ma'am, you can continue. Sure. So I'll now I'll be talking to you about some isolated incidences, and you will hear some terms which are still popular, you know, which we are hearing. For us maybe they are for the first time, but the general public के लिए they are for the first time. But सुन के आपको आश्चर्य होगा कि they have been in existence because they have such things have happened earlier also. I want to talk about Mary Mallon. Her survival time was 1862 to 1938. She was a person, she was a cook, and she's also known as Typhoid Mary.
है ना, अनयूजुअल नाम. शी इज कॉल्ड एज टाइफाइड मैरी because she was believed to have infected 53 people with, at least to begin with, 53 people with typhoid fever. And again, a very interesting fact that she is the first known asymptomatic carrier of the disease. And she was forcibly quarantined by authorities. आहा, दो शब्द सुनने को मिले, asymptomatic carrier और आज से 150 साल पहले या उससे भी ज्यादा, है ना. एंड शी वॉज फोर्सिबली क्वारंटाइंड. अब ऐसा लग रहा है कि एक तो हमने सुना ही नहीं था एसिम्प्टोमेटिक क्या होती, पर कोविड ने हमको ये शब्द सुनाया. देयर आर सो मेनी पीपल जो कोविड के एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, यानी उनके अंदर कोई बाहरी सिम्टम नहीं दिखाई देता है,